अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाइड। आपको याद होगा जब हमने कल पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सो इसमें हमने पढ़ा था जो लाइट हैं जब वो इमर्ज होती हैं फाइनली आफ्टर सफरिंग टू रिफ्रैक्शन, वन एट दिस एंड वन एट दिस फेस एंड अदर एट दिस फेस, it finally emerges from the glass in a direction parallel to that in which the light has entered the glass slab. ये हमने कल पढ़ा था। यहाँ रिफ्रैक्शंस होती हैं at two faces, they at this face and this face. So on passing through a rectangular glass slab, this is the rectangular glass slab, the ray of light supports two refractions, one at this and other at this face, one while going from the air to glass and other going from glass to air. This is air medium. Light emerges like this from rectangular this glass slab in direction parallel to that in which it has entered the glass slab. However, the final emergent ray है, this is the emergent ray, it is slightly shifted sideways. So there is little shift, or that is called little displacement from the direction of the original incident ray by distance x. This x is called lateral shift or a lateral displacement. ये भी हमने पढ़ा था जो lateral displacement है, lateral shift है, इसके पे डिपेंड है एक तो reference index of the medium, thickness of the slab and etc. So ये हमने कल पढ़ा था what actually happens to the light of ray when it enters the glass slab. अब हम एप्लीकेशंस को चलेंगे जो हमने पहले ही डिस्कस किए थे। यानी अगर हम एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट है जो हमने पढ़ा था पहले दिन जब हमने लिया था सपोज वाटर, इसमें हमने इमर्स किया था पेंसिल यहाँ और स्ट्रेट स्टिक। यहाँ पर ये जो है ये जो पेंसिल है स्ट्रेट पेंसिल, इट अपीयर्स टू बी बेंट लाइक दिस। Originally ये होता है मगर it appears like this, bent. The part of this pencil which is inside the water appears also it appears thicker, this part thicker than this. If we would from the sides of this container in which there is water. इतना ही नहीं, जब हम ग्लास स्लैब लेंगे इंक डॉट हम यहाँ प्रिंटेड हम लेंगे प्रिंटेड पेपर और इंक डॉट, इसको जब हम इसको ऊपर डालते हैं ये ग्लास स्लैब, इसको हम देखते हैं ग्लास स्लैब से देखते हैं इस इंक डॉट को, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड। यहाँ प्रिंटेड जो है यहाँ पर लेंगे हम, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड दीज प्रिंटेड लेटर्स when we look into these printed letters from the through this glass slab, it appears to be raised. This is again due to the refraction of light. So because of refraction of light, the ink dot which is marked on the sheet of paper appears to be raised. The ink dot is suppose like this. अगर हम ऐसे फिगर बनाएंगे, this is the thickness of this or height of this, thickness of this. So जब हम यहाँ पर डॉट डालते हैं इंक डॉट, ये हमें क्या होता है, सपोज यहाँ इंक डॉट होता है, ये इंक डॉट यहाँ पर, मगर ये दिखता है यहाँ पर
आई पर, अगर ओ पर होगा ये आई पर दिखता है, क्योंकि जब यहाँ देखते हैं इट बेंड्स तो व्हाट इज़ द नॉर्मल, सो हम अगर नॉर्मल लेंगे इट बेंड्स तो व्हाट इज़ द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट इज़ गिलास्ट एयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पर बेंड होगा ये, क्योंकि अगर हम देखते हैं सपोज दिस इज़ द आई, हम यहाँ से पर देखते हैं दिस इज़ द आई, सो हमें दिखेगा यहाँ जब हम देखेंगे, सो जब हम देखेंगे ये यहाँ होगा, ये appears to be at I instead at O. Ink dot is at O, but it appears to be at I. It appears to be slightly raised. This is due to the refraction of light, as explained in this way, because here refraction takes place. The light goes from glass to air. Glass to air, because object is under the glass. So object is under the glass. I dot, ink dot. ऑल्सो अगर हम लीमन लेंगे, इसको गिलास में लेंगे, व्हेन वी पुट दिस इन द गिलास ऑफ वाटर, सो एंड इसको हम साइड से देखेंगे, इट अपीयर्स टू बी बिगर इन साइड, अगेन डू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ऑल्सो द शेप ऑफ सन इज ओवल शेप्ड एट सनराइज एंड सनसेट, दैट इज अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हम आगे पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में. अगर हम थोड़ा एक्टिविटी करेंगे समझने के लिए, अगर हम एक कॉइल लेंगे, इसको हम एक वाटर टब में प्लेस करेंगे, सपोज दिस इज द वाटर टब फिल्ड विद वाटर, इसमें हम कॉइन रखेंगे, सपोज दिस इज द कॉइन, ये बॉटम तक जाएगी. अब हम यहाँ की तरफ देखना है हमें, सपोज दिस इज द ऑब्जर्वर, यहाँ ऑब्जर्वर है, दिस इज द ऑब्जर्वर, ये देखिएगा ये कहाँ है. अगर इसको जब जो ही ये देखेगा ये कॉइन की तरफ, कॉइन इसको यहाँ नज़र आएगी आई पोजीशन पे, ओ पोजीशन पे कॉइन होगी, मगर इसको आई पोजीशन पे, आई पॉइंट पे नज़र आएगी. ठीक, क्योंकि जब ये यहाँ से लाइट आती हैं, जब जिस तरह हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है, लाइट आती हैं, सो लाइट मूव लाइक दिस, ये उनकी तरफ जाना है. सपोज यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर देखता है, सो यहाँ होगी, यहाँ से लाइट होगी, यहाँ से लाइट मूव होगी, जो इसकी आंखों में जाएगी. ठीक, मगर चूँकि यहाँ पर होता है रिफ्रैक्शन होगी, गिलास एयर, ये बेंड हो गया लाइक दिस, सो यहाँ तक होगी ऐसे, इसकी लाइट जो यहाँ से लाइट ओरिजिनेट होती है, वो इस डायरेक्शन, इस तरह से बेंड होके ऑब्जर्वर की आंखों के पास पहुंचती हैं या आंखों में इंटर होती हैं. ठीक, मगर चूँकि अगर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस, ये हमें जो ये ऑब्जर्वर हैं, इसको कॉइन यहाँ पर दिखेगी, दैट इज़ अपरेंट पोजीशन ऑफ दिस कॉइन, यहाँ पर इसको दिखेगी आई पर. सो अगर वो कोशिश करेगा पिक करने की, सो थोड़ा इसको निकालने की कोशिश करेगी इस टब से, वो यहाँ इसको चूँकि यहाँ नज़र आएगी, सो यहाँ वो जो ही हाथ डालेगा अपना, ही विल बी नॉट एबल टू फाइंड दिस कॉइन, टू गेट दिस कॉइन, बिकॉज द कॉइन इज़ here. The coin appears to be at I, but actually coin is at O. This is again due to refraction of light. So a ray of light originates from the coin, from the coin OA, and while propagating from water to air, this is the water to air, medium water to air, it moves away from the normal. The refracted ray जो है, the refracted ray AB जो refracted ray है like this, refracted ray AB appears to be coming from the eye. इसको अगर हम backward produce करेंगे, and therefore the coin is at eye. What the observer sees, इसको यहाँ पर दिखेगी coin. ठीक, अगर हम इसको backward refracted ray को backward produce करेंगे, so when he approach to point eye, where the coin appears to be, to pick the coin, where the coin is actually not present. And जब वो यहाँ कोशिश करेगी इसको निकालने की, वो he will not be able to find it because the coin is at O. So the position of apparent position and the real position of this
of this coin is different. So what is the real position? That is at O, apparent position at I. So it appears to be raised. This is again due to the refraction of light. So this is its explanation. अगर हम अब देखेंगे, सो हम हायर क्लास में डेराइव भी करेंगे, जो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वी कैन एक्सप्लेन व्हाई अ कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम of a container appears to be raised when the container is filled with water. We can show that जो refractive index of water जो है with respect to air, refractive index of water air और mu से भी denote हमने किया है refractive index of water with respect to air, that is equal to real depth divided by apparent depth, that is equal to 4/3. हम डेराइव भी कर सकते हैं और हायर क्लास में डिफाइन कर. सो अपरेंट डेप्थ, जब हम अपरेंट डेप्थ निकालनी है वायर द कॉइन लाइज, हम ऐसे निकालते हैं. आपको याद रखना अपरेंट डेप्थ इक्वल टू 3/4 रियल डेप्थ. अपरेंट डेप्थ इक्वल टू 3/4 ऑफ रियल डेप्थ. सो ए ग्लास स्लैब, जब हमने अभी पढ़ा था ग्लास स्लैब जो है it appears to be thick then it actually is. This is because the bottom of glass slab appears to be raised. An ink dot marked on a paper appears to be raised when viewed through a glass slab. Twinkling of stars, it also takes place due to the refraction of light. Oval shape of sun and at sunrise and sunset can be explained on the basis of refraction of light. So these are the applications of refractions of light. एंड थैंक्स. कल हम न्यूमेरिकल्स 2-4 उठाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के. टिल देन इट इज़ ऑन एफ. गुड बाय.